In 2025, Pakistan has faced one of its most devastating floods in recent decades, with heavy monsoon rains and glacial melt combining to unleash widespread destruction across the country. From the northern mountains of Khyber Pakhtunkhwa to the fertile plains of Punjab and Sindh, entire communities have been inundated, roads and bridges washed away, and farmland destroyed. Rivers swelled beyond their banks, flash floods swept away villages, and millions of people were forced to leave their homes in search of safety. The scale of human suffering has been immense. More than 800 people have lost their lives, over 1,000 have been injured, and millions remain displaced, struggling to rebuild amid the ruins of their livelihoods. The floods have not only taken lives but also destroyed Pakistan's agricultural backbone, submerging vast areas of rice, wheat, and cotton fields. With thousands of villages under water and more than 1 million people evacuated. Caritas के साथ रिवर काफ़ी है, इसके किनारे पे यहाँ की जो रिवर लाइन जो इसके बैंक्स के जो कम्युनिटीज़ हैं, जो इलाके हैं, खाली करवा लिया गया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में रेस्क्यू वर्कर्स, मुख्तलिफ जो रिस्पॉन्स टीम्स हैं जो गवर्नमेंट की हैं, और उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन की जानब से यहाँ पर डिप्लॉयड है। और कैरिटास पाकिस्तान जो है वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पे है। हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के इदारे हैं। Pakistan have left vast areas submerged, creating stagnant pools of water that are fueling outbreaks of dengue, malaria, and cholera. Overcrowded shelters and damaged sanitation systems are worsening the public health crisis, putting millions at risk of disease. Caritas Pakistan has played a critical role in responding to the needs of the most vulnerable. Drawing on its network of diocesan units and parish-based volunteers, Caritas was among the first to mobilize when floods began to intensify. Teams worked tirelessly to provide emergency relief, distributing food rations, safe drinking water, hygiene kits, to families stranded in isolated villages. कैसे हालात है बहुत बुरे घर पानी खड़ा होना ना कमरे के अच्छा असं बाहर आ गए तो बारिश की थोड़े सामने पिंड कि पिंड पिछले पिंड सलवार कोल दसी आ गया सानू ना कोई टेंट मिलता तो ना अभी कारीदार रिक्वेस्ट करने तो सानू खुराक रिस्पॉन्स की टीम अभी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के साथ जो दरियाए चनाब का इलाका है हेड मोहम्मद वाला यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये हम देख सकते हैं कि अभी बहुत सारा इलाका जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। पानी बहुत तेज़ और बड़ी रवानगी के साथ यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हम देख रहे हैं इसमें पीछे से जो लाइफ स्टॉक है मवेशी है वो भी इसमें बैठे आ रहे हैं। इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है और हम फोर्स ही कर सकते हैं। बाकी जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी जानब से बाकी जितने भी यहाँ पे इदारे हैं उससे हमने बातचीत की है, हमें देखने को मिला
ये बहुत ज़्यादा जो है वो ये इफेक्ट करेगा आने वाली जितनी भी इर्द की जो लोकेलिटीज़ हैं रिवर रावी के। हम कारिटास पाकिस्तान की जो टीम है वो पलांटो है और आगे जो है वो लोकेटेड है अपने वॉलंटियर्स के साथ, और हम अपने रेस्क्यू करने के लिए लोगों को सेफर प्लेस में भेजने के लिए उनको जो लाइफ स्टॉक है उनको सेव करने के लिए उनकी जो इम्पोर्टेंट बिलोंगिंग है उसके लिए वेरियस प्लेस कर रहे हैं। और हम फोर्सी करते हैं तो ये जो सिचुएशन है ये क्रिटिकल हो। कारिटास पाकिस्तान बाकी इदारों के साथ मिलकर प्रिवेंशन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं और इसके अलावा बाकी जितने इदारे हैं सिविल डिफेंस रेस्क्यू 112 के साथ मिलकर अपना रोल प्ले करेंगे रेस्क्यू के हवाले से। और उसके अलावा जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है खासतौर पर जो टेम्प्रेरी शेल्टर से लोग काम करने के साथ साथ कारिटास पाकिस्तान के साथ शामिल हो इस ग्लोबल कॉज में टू सेव द ह्यूमैनिटी। ये जो इस क्राइसिस या डिजास्टर सिचुएशन है जो पाकिस्तान में हम फेस कर रहे हैं।